we will start our webinar. Jai Hind, Namaste, and good evening to everyone. This is Soel. Namaskar. Jai Hind, sir. Namaskar to all. Momita ji, good afternoon, good evening. Namaskar. Pranam. Soel ji, namaskar. Jai Hind, sir. Nice. You are giving nice instruction that everyone should have their video on. Yes, sir. And if internet does not support only, then they are excused. Otherwise, not. Okay. Welcome to all for our national level webinars. Now we will introduce about our guest of honor, Mamata Chaturvedi, our National President of Youth and Community Empowerment (WICCI), is an MTTM, an entrepreneur, founder and CEO of Destinia Tour and Travelers, G100 India Chair, Human Rights and Beauty Wins, Travelers and Beauty Wins, Vulgoer, YouTuber, mental health speaker, political observer, passionate singer, and photographer, and so on. A great follower of Mass Saraswati. Now, I would like to say something. Sorry for inconvenience. I would like to invite our ma'am to say something about our today's webinar. Namaskar everybody and warm welcome to Dr. Pawan Kumar sir. Thank you so much for being our chief guest today sir. I heartily welcome you on behalf of Youth and Community Empowerment Council. And to just correct you a little bit, Soil, I am Miss. Till now, I am not Mrs. So I am Miss Momita Chakravarti. So I hope you all are keeping well physically as well as mentally. So the topic for today's webinar is spiritual empowerment for women professionals. And thus, before starting my addressing remarks, I want to share 5 golden rules of spiritual empowerment, which according to me are applicable to only women, not only women actually, but to everyone listening to us today. So first of all, the rule number 1, which I feel all the time, is like be kind and try to understand others' perspectives from their point of view. But give them only that amount of opportunity as much as they deserve. After that, what happens is so that they do not take you for granted. That is the first thing which you can do, is like being kind and understanding everyone from their point of view. Try to understand them from their point of view. Second rule, I would say, according to me, for spiritual empowerment is nothing but hearing your inner voice. Always listen to your instincts and, listen to your heart, and heart never lies. Whatever instincts are given and you hear them from your soul, those maximum time are correct. Maximum time they are correct. Rule number 3 is loving what you do is good for spiritual empowerment, but doing what you love is even better. Rule number 4 is be honest to yourself and create a similar environment for people around you where they can share their thoughts honestly in front of you. That's why I feel that being a part of youth and community empowerment, I feel as of now that I have always tried my level best to, be free and allow everybody to speak honestly in front of me. I hope you all would agree to me. If not, do forgive me and allow me that opportunity that I can, you can speak honestly in front of me. And the final rule number 5 today will, according to me, will be surround yourself with enthusiastic, positive, and like-minded people who always inspire you to become the best version of yourself. So, for me to present here and share the screen with our dignified chief guest speaker, Dr. Pawan Kumar Singh, and all our zealous, strong, and beautiful Community Empowerment Council members under Women's Indian Chamber of Commerce and Industry, and talking with you all today on this very exciting national on
this prodigious topic of spiritual empowerment for women professionals. But I'm really happy to see so many, male participants joining us today, and that is very exciting and motivating for me. I'm delighted to have this opportunity to address such an distinguished guest who is none other than Dr. P.K. Singh, Honorary Director of Indian Institute of Management, Tiruchirappalli, Tamil Nadu, India. So I'm Momita Chakravarti, National President of Youth and Community Empowerment Council under Women Indian Chamber of Commerce and Industry. Take this gracious opportunity to welcome you all on behalf of the entire team YCEC and thank you all for participating in this knowledge-packed webinar with such enthusiasm and positive energy. I welcome respected Dr. Pawan Singh sir, Honorary Director of IIM, to grace this occasion and enlighten us with his insightful thoughts. Over to you, sir. Thank you. Thank you, Momita ji. Thank you, Soyal ji. And thanks to the entire team of WICCI and giving me a opportunity to talk to young minds. And I find mostly sisters and few brothers also have joined. So my modus operandi would be that I'll keep you poking. I'll keep you alert. I'll keep you asking. Earlier, I had planned that I will deliver for about 45 minutes in a flow without letting you ask any question. Then I'll be open for question answer, something like that. But now I change my style. It will be a complete conversational dialogue and not a speech. Is it acceptable to you all? Momita ji, you have to give green signal, you know. Absolutely, sir. I'm totally in support of that. I'm totally in support of that. Fine. And let us talk something very, very profound and serious, but without making our mood very serious, isn't it? Let us keep our mood very light, very delighted, and let us discuss that. So first light mood I will reflect. It seems that Momita ji and myself both talked in the morning on telephone, which color of clothes you will wear. So she decided yellow, and I also perhaps decided yellow. So that is the first lighter side of my note. That's fine. I'm also thankful to. That's a very nice day. Thank you, Momita ji and your team and Soel ji, having coordinating this occasion. And dear all respected and respected persons among audience, some of you I may be knowing, some of you I may not be knowing, but one condition is there. Because I'm changing the pedagogy, or let us say way of interaction, please necessarily take it as a request, a necessary request that please put your video on. Please put your video on. Even if your voice quality goes bad, please keep your video on. And if I ask you to interact, and if you interact and your voice would be cracking, then I would say that please put your video off and only audio on. But for time being, please put your video on, whatever may be the quality of your video or internet speed. I'm just waiting for 5 to 10 seconds. Please, audience, put your video on. Otherwise, it will be difficult to bring any desired impact in this interaction. Thank you, Nidhi ji. You have put your video on. I find that Nidhi ji, Manu ji, Harshita ji, and what is your full name, PM? Please put your audio on. Pardon? Priyanka? What is your full name? I can now hear you, sir? Yes, please. What is your full name? Prachi Maheshwari. I was guessing Priyanka Maheshwari, but anyway, I was 50% correct. I got pass mark. So, fine. And now I find also on the screen our sister, Dr. Reena Adhwaryuji. Reena ji, are you from Ujjain? Yes, sir. Namaskar, yes, I could recognize your face. I am from Ujjain. I could
I could recognize your face. You were Yeah, a student of Professor Sudha economics Murthy ji. department. Yes, sir. Yes, I got you. Namaskar. Now, but after all, we got one Priyanka ji, Priyanka Agrawal ji. I thought Maheshwari ji is Priyanka, but she uh, came up to be Prachi. Now we have Priyanka Agrawal ji. Thank you for your video on. Keep your video on, and we are going to have a very serious discussion, but in lighter mode. We will have interaction. Please put your video on necessarily for what you are waiting. Preksha ji, Arvind Yadav ji, Jagriti Doshi ji, Nivedita ji, not Nivedita Chauhan ji. There is another Nivedita. We are the same person, sir. So please join with only one link. Fine. Now I find Preksha ji, Arvind ji, Jagriti ji. Please join, that will be better. So now let us begin. First, let me say this is my second occasion to be on the platform of WICCI. I'll just brief that. First occasion was the occasion when your team of higher education, because there are various wings. This is the wing which is basically called the Youth and Community Empowerment Council. That is the platform today of WICCI. But earlier I had interacted on the platform of WICCI from higher education wing, and the program was coordinated by Dr. Sayali Gankarji, Vice Chancellor of DY Patil University, Dr. Supriya Patnaik ji, I remember, Vice Chancellor of CUTM, Dr. Prabhati Pati ji, Vice President of Council of Higher Education of WICCI, Dr. Rajeshwari Narendran ji, the Member National Council of Higher Education of WICCI and presently Director of NTPC School of Business at Noida. So they had all coordinated, and I think almost 150 participants were there. So we had gone for a lecture mode. Today we will go for interaction mode. And after saying that my heartfelt thanks, let us come to the topic and let us have some discussion. Topic everybody knows. Let me keep asking. And the moment I'll pick a name, you will put your audio on. And once I will request, you will put your audio off. But video will remain on throughout. So, Dr. Reena ji, you are one of the senior participants now. Of course, I saw you in early 90s. You were very young, in your early 20s. Since then, I know you. What is the topic of today, Dr. Reena ji? Any idea? Moment I request, I put a question. Please put your audio on. Let it be interactive, as if we are sitting face to face. Okay, there is some Spiritual problem. empowerment of women. Yeah, spiritual empowerment. Exact topic is spiritual empowerment for women professionals. So this is the topic. So women in profession, they are working. Many women have joined jobs. They are in certain profession. Apart from very important work that they are also the center of gravity of the household affairs. Apart from that, they are also professionals. So how such sister folks can be spiritually empowered? Now, question is, who will empower them? My speech will empower women professionals? And who am I to empower? Let me set the ball rolling by saying, actually, women need to empower rest of the world on spirituality. Rather, a person called Pawan Kumar Singh is trying to say something which will empower our sister folks, women. Because women are the basic center of gravity of this existence. And men are also needed. Let me tell you, because there is a women club, because there is a women chamber of commerce,
because there is a women, let us say, any industry association, or because there is a women club, we should not lose the sight of men. A developed woman will always look at a man with great respect and love, rather saying that for long years you have actually tortured us, so now it is our time to torture you. That kind of revengefulness has no meaning, it is meaningless. So, men and women are division created by the nature to a certain extent, so that the nature must continue. You know, in old films, when there was Hindi film actors, one interview was taken of very legend actor and like a complete cinema person, Raj Kapoor, and he was asked that your 2 or 3 films where you invested a lot, they have all gone astray. They could not earn money on box office. What is your next plan? And he said, the show must go on. The show must go on. Please understand, dear sister folks and dear brothers, few of them who have joined, if you understand the scheme of things of nature, your dukkha, your sorrow, your dejection, your dissatisfaction will come down to almost lowest level. If I and you know the scheme of things around, what are the rules and regulations and basic, let us say, guidelines based on which the nature has been created and how we should operate in this nature, in this existence, in this society, in this family, with ourselves. Once you know the rule of the game, the scheme of the things, you will become very happy. You will start becoming more and more and more and more unhappy, because we don't know the scheme of thing. We keep complaining to others and to ourselves, and we always live with very compromised degree of happiness. Let me tell you one example. If you have any responsibility to meet, any work to do, if you do not do the work, if you do not do the work, your failure is guaranteed. That is for sure. If work is there to be done, you do not do the work, your failure is guaranteed. But if a work is to be done and you did it with utmost perfection, whatever was possible from your side, the success is not guaranteed. Okay, so you just said about how spirituality is important, and you said that if we do not work for our goals, then it is definitely a failure. But even if we do it, it's a contract which we are with the universe, which we have with the universe. So even if we work hard, it does not guarantee us success. And that's very good. That's very good. So this is the scheme of the thing. This is the policy on which you have actually signed. You purchase LIC policy, you purchase any kind of, let us say, bank account, type of account, then you say terms and conditions, sign. And I promise you, dear sisters, that if you know the rules and regulations, prescriptions given, that this is the nature of the nature in which you are born, then many of your invented, self-created sorrows, pathos will get evaporated. That is for guaranteed. You will keep smiling. You should never actually do any kind of postponement with your sense of joy and delightfulness. So it is just one example I gave you, that if you do not work, failure is guaranteed. So reverse should have been correct, should have been correct. If wish could have been there, that if if non-action guarantees failure, then action should have guaranteed success. As simple as that. But that scheme of thing is not there. And because it is not there, and perhaps some of us, we do not know or appreciate or imbibe, chew and digest, and that's why there is invited trouble for us.
Please remember, if you are spiritual, and we are all spiritual, I will tell you whether we have to become spiritual or this question itself needs to be addressed. My point is that once you know that you are essentially a spiritual being, nobody can make you sad without your permission. Achha, in the meantime, because it is a small group, we can also keep taking care of each other. We are very happy to see with Prachi ji, our new guest in this congregation. So, very happy. That you see, this is the flowering and fruitioning of the nature, gift of the nature, gift of the nature. And let us continue. I was saying, Rohan Saxena ji, please put your audio off and video on. Reverse is not allowed. That video off and audio on. Okay. So what I was saying, I was simply saying that nobody can make you unhappy without your permission. And what mistake you do? The mistake you do that you are too liberal in giving permission to anybody every time to make you unhappy. Be stringent, be bold, be miser. वहां कंजूस बन जाइए. I will not give you permission. I will not give you permission. You tried to make me sad. You tried to make me unhappy. You tried to make me feel low. But I have not given you permission. So I have not given you permission to make me sad. I am not sad. I am not unhappy. So please understand this. These are all the scheme of things of nature that is around us. So at workplace, I'll bring one controversial, not controversial, most popular but misunderstood sutra of Bhagavad Gita. Reena ji lives in the holy city of Ujjain, where Lord Krishna went to. On screen you can see Dr. Reena ji. She lives in Ujjain. Am I right? Still you are in Ujjain? Yes, sir. Yes, okay. You are right. Yeah. So she lives in Ujjain, and I reached Ujjain once upon a time, 34 years back, to join as a lecturer in the State University of Ujjain, which is called Vikram University, Ujjain. So people used to ask me that why you have gone so far from your native place, Bihar, to work in Ujjain. I said, I feel proud. Where Lord Krishna went to receive his study, I am going to teach there. अब लॉर्ड कृष्णा के आंखों में आंखें डाल के बात करने की हिम्मत डालूंगा और कहूंगा अगर कहीं कृष्ण मिल गए कि जनाब जहां आप पढ़ने गए थे वहां मैं पढ़ाने गया. So what I was saying, just jokes apart, Ujjain is a very holy city, and Lord Krishna studied there in Sandipani ashram. I am tempted to bring a most popular shloka of Bhagavad Gita here, because I also call it highly misunderstood shloka of Bhagavad Gita. And there is an open question to all. Anybody who would pick up my question and wants to give answer, quickly put your audio on and give me answer according to you which shloka is the answer. I'm asking you one question. More or less, generally accepted, which is the most popular shloka of Bhagavad Gita? Question over. Yes, please. Don't raise your hand. Don't waste your time. Put your यदा 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 हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्रायाय साधुना विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे. Very nice. Momita ji, please put your audio off. Very nicely you spoke and your pronunciation is quite clear. But instead of paritrayan,
Paritranaya. Paritranaya cha sadhuna. So Paritranaya. But Prachi ji also had raised hand. Do you agree? The same shloka you wanted to chant? Yes or no? Which shloka you wanted to chant? Now, audio on. Audio on. कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूमा ते संगोस्तव कर्मणि. Okay, very nice, Prachi. Anyone else? Just one more, because we can't keep asking the same question to many. Okay. So these are all views, no? Which is the most popular shloka of Bhagavad Gita? I also personally think that most popular shloka of Bhagavad Gita is the 47th shloka of second chapter of Bhagavad Gita, which was told by Prachi ji that karmanyevadhikaraste ma phaleshu kadachana ma karmphal heturbhur mate sangoh tu akarmani. This shloka is also used when B.R. Chopra's Mahabharata starts on TV. Somewhere I asked question that who created Mahabharata, means it's history, literature. And somebody said B.R. Chopra. I said, fine. That is not the answer. It is Ved Vyas who wrote Mahabharata. But B.R. Chopra and his team, under his direction, very nicely put the whole theme on the screen and made it popular. But yes, Momita ji, I agree with you to that extent that the shloka that you pronounced, it was also used as the second sequel in the beginning of any episode of Mahabharata serial on TV screen. So shloka told by you, I think this has become now the second most popular shloka of Bhagavad Gita. But I will not go to second most popular, I'll go to first most popular, that is karmanyevadhikaraste ma phaleshu kadachana ma karmphal heturbhur mate sangoh tu akarmani. This understanding of this shloka is very important, because I say that this is the most popular and invariably misunderstood shloka of Bhagavad Gita. Let me check your understanding, because many of you are, almost all of you are very, very young to me. So I can afford to use such language that let me check your understanding. Okay. So anyone, don't raise your hand. Simply put your audio on after listening my question, if you are willing to come forward and give the answer. What is the basic English meaning or Hindi meaning of this shloka? Yes, question over. The basic meaning in Hindi is कर्म करो फल की चिंता मत करो. That is the one line meaning which we use for just explaining this to people. But actually it has a hidden meaning behind lines. That's like read between the lines. This is not the actual meaning. People misunderstand it as कर्म करो पर फल की चिंता मत करो कैसे ना करें. But कर्म is let go the karma. Let go that feeling. Detach होना है कर्मा को करने की feeling से. If I am attending this seminar, in this workshop, I have to listen to it. I don't have to think इससे मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या फायदा है. It's like कर्म करो, सिर्फ सुनो, but उसका फल मत देखो. If you are doing something for anybody, you shouldn't think about इससे मुझे क्या मिलेगा, मेरा क्या फायदा है. And it was actually said to explain to people कि आप outcome से detach हो जाइए, then only you can give your 100% to the work, give your full effort to the work, but let go the attachment of that result कि मैं क्यों करूंगा ऐसा कि मुझे ऐसा मिलेगा. That is my understanding of the shloka. हाँ, तो मेरा एक और प्रश्न है प्राची जी आपको कि मान लीजिए आप इस सेमिनार में आ गई और आपने कहा कि हमें सुनना है और क्या फल मिलेगा इसको नहीं सोचना है, तो ऐसे ही मान लीजिए आप हर जगह जाके बैठती रहेंगी, कहीं कहीं जहाँ कोई कुछ बोल रहा है, मुंह खोला नहीं कि आप सुनने के लिए बैठ गई, किसी ने ओंठ खोले नहीं कि आपने उसको कर्ण दे दिए, अपने कान दे दिए, तो फिर क्या ये समय यूं ही जाया नहीं हो जाएगा? Whether the time will not get... Again, you have to decide. I understood your question, sir. The question is, if somebody is gossiping about somebody or they are talking about bad things or ill things, I have to decide whether I want to sit here and waste my energy on it or not. That is, you can think ये कर्म नहीं करना है. कर्म की भी एक defined list है गीता में कि आपको क्या कर्म करना है. कर्म करना है तो अच्छा सुनो. अगर आप संगति अच्छी रखोगे तो अच्छी संगत कहीं ना कहीं सुन के वो फ्यूचर में काम ही आएगा.
And I don't want to boast it, but sir, I'm reading Gita for the third time. And I am myself a very spiritual person. So I read that in very detail कि क्या कर्म होना चाहिए क्या नहीं. And the last Ath Garv Gita Sar is the most the clear thing which any person can understand. चलिए बहुत बढ़िया. अच्छा, और कोई भाई या बहन जो है कुछ बोलना चाहेंगे कि शाब्दिक अर्थ क्या है, पीछे का the background meaning, the profound meaning, the esoteric meaning, the mysterious meaning, the subtler meaning? We are not going to that now. I'm simply asking, what is your understanding about basic English or Hindi translation of karmanyevadhikaraste ma phaleshu kadachana ma karm phal heturvhu ma te sango tu akarmani? What is the basic English meaning? Or maybe Hindi meaning? One more participant's space is available. Fine. Let us proceed from here. To much greater extent, Prachi, Rohan Saxena ji. Yes, बोलिए. रोहन जी, आप कुछ कहना चाहते थे? नहीं, वहां कोई है नहीं लगता है. ठीक है. अच्छा, ये मैं एक बार और रिक्वेस्ट करूंगा, ये यश कालरा जी, साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी नाम से जिनका है, दीक्षा चौरसिया जी, प्रेक्षा सेठिया जी, मनु द्विवेदी जी, रोहन सक्सेना जी, 5 और लोग अपना वीडियो तो ऑन कर लीजिए. बहुत छोटा ग्रुप है, इसलिए इंटरेक्शन होगा और आपको मैं देख पाऊंगा तो कुछ क्वेश्चन पूछने की मुझे जो है उत्कंठा रहेगी. अन्यथा ये 45 मिनट का लेक्चर तो कुछ होता नहीं है, मैं अकेले बोल के निकल जाऊंगा. ठीक है, तो चलिए वीडियो ऑन रखिएगा तो मुझे भी उत्साह बना रहेगा. देखिए इसका अर्थ क्या है. ये भगवत गीता के अधिकांश श्लोक 15वां अध्याय को छोड़ करके आपकी जनरल नॉलेज के लिए, सॉरी, many of you may not be knowing Hindi with comfort, so I'll speak in English only. Majority of the shlokas of Bhagavad Gita, except few in 2nd and 15th chapter, they are in Anushtup Chand, and Anushtup Chand is in 4 parts. Gayatri Chand is also in 4 parts. Every shloka will have 4 parts. First line 2 parts, second line 2 parts. But Gayatri Chand, basically each part has 6 syllables, 6 letters. So 6 4 are 24 letters would be there in Gayatri Chand. And Anushtup Chand, which is very, very rhythmic chand, in each part there would be 8 letters. So 8 4 are 32 letters will be in most of the shloka of Bhagavad Gita. So this is also in Anushtup Chand. कर्मण्येवाधिकारस्ते, गीता को कहा गया है गीता शुड बी संग. इट्स नेम इज गीता. गाओ, गाइए. तो मैं आप सबको अभी इनवाइट नहीं कर रहा हूं, समय कम है, तो मैं खुद ही उसको थोड़ा सा राग में गाने की कोशिश करता हूं. कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भू मा ते संगो तु अकर्मणि. Meaning is, karmanyevadhikaraste, karmani ev adhikarah tu. Whenever you recite any sutra, you should recite with sandhi so that you are in a rhythm. You are in the poetical mood. But when you try to understand meaning, necessarily go for sandhi vichedam. Once you do sandhi viched, understanding Sanskrit becomes easier. The meaning is, karmanyevadhikarahte, your right is limited up to the choice of the action. Your right is limited up to doing the action or doing the chosen action. Ma phaleshu kadachana. Kadachana means never. Never the jurisdiction of your right is extended to the fruit of the action. Your jurisdiction of your right
is never extended. Kadachana, be careful, never. Kadachan means never. Never the jurisdiction of your right is extended to any control or dictation to the result. Ma phaleshu kadachana. Ma karma phal hetur bhu. Don't engage in action. Don't engage in action. It means while getting engaged in action, don't keep focusing on fruits, on the result. मां के मां यहां मां नहीं है. मां आकार मां चंद्र बिंदु मीन्स मदर. दैट इज हिंदी वर्ड. मां आकार मां हिंदी. अभी एक हल्की ऑडियो दीक्षा चौरसिया जी ऑडियो को बंद करें प्लीज. हाँ, देखिए मां मान और मां मैं फर्क बताता हूं. मां आकार चंद्र बिंदु. मां मीन्स मदर. दिस इज नॉट ए संस्कृत वर्ड. दिस इज यूज्ड इन हिंदी, उर्दू. मां. One is ma akar ma, and above that there is a point, bindi. Man. Yeah, I'll take later. Waste. So ma akar bindi man. Man, this is a Sanskrit word. It means me, I. And only ma akar ma. No Chandra Bindu, no Bindu. So it has to be pronounced without nasal effect. Ma, not ma. Ma, mother. Ma, mother. Ma, me. Ma. Ma. No Bindi, no Chandra Bindi. That is in the shloka. And ma, only ma akar, no Bindu, no Chandra Bindu. It means lest not. कहीं ऐसा न हो जाए, ये मत कर बैठिएगा. नहीं नहीं ऐसा नहीं. नो नो नॉट दैट. ये है मां का अर्थ. इसलिए इसमें मां 2-3 बार आया है. तो मां कर्म फल हेतुर्भो. कर्म के फल का हेतु कभी मत होना. इट मीन्स while performing the action, if you keep hankering for result, that tendency you must drop. ये तीसरा पार्ट हो गया अनुष्टुप छंद का. मां कर्म फल हेतुर्भु. और फिर चौथा कहा मात संगोह तु अकर्मणि. Lord Krishna thought that if I keep saying only do action and not for result, and while doing action don't think for result, people may actually take a decision, then why I should do any job at all? Why I should do the action? Let me put off the action. Let me not do any action. So Krishna was knowing. That's why, ordinary teachers answer questions, and extraordinary teachers, they answer such questions which will be raised after some time by the students, because teachers know which questions may be raised after 10 or 15 minutes. So Krishna was knowing that once I will tell something, a person who is of different temperament will get a different meaning of it, would not like to receive the truth behind it, would paint the whole picture as per his or her perception. So he pre-emptied the mind of agitated Arjun that time and said, Mat sango tu akarmani. And also please take care that you should not become a non-doer. ये हम करेंगे ही नहीं. जैसे कभी कोई बच्चा करता है ना ऐसा, भाई बेटे ये करो 5 चीज आपने बताया, तो वो चमक के बोलता है, अच्छा ठीक है छोड़ो, मैं खाऊंगा ही नहीं, मैं करूंगा ही नहीं. तो नॉन एक्शन भी मत करना. Don't be a non-doer. Anyway, why I said this, let us come out of this quickly, and how it is useful for working women or anyone. So meaning is clear. I will ask question to Manu Dwivedi ji. Manu ji, please put your audio on.
Manu Dwivedi ji, please put your audio on so that you can talk with us. Yes. Manu ji, tell yes or no. Manu ji. Yes, sir. Very nice, very nice. So more or less, I will not ask you, please repeat the meaning, but more or less the meaning is clear, no? Now of that shloka. Yes or no? Yes. Or should I repeat once? But it is clear. It is clear. But then make use of this shloka for your purpose. Shloka's meaning should not be known to parrot it and to say in a webinar to impress others. Basically, it should give auspicious impact on your life. So what is the impact if we understand the meaning? Why it is said so? Basically, it is said that it has never been said that your action should be goal-less, direction-less. Your action should be fruitless. You should keep doing any action that comes randomly to you. No, you should plan your action. You should keep target in mind. It only says that when you do planning, please do the planning. But when you implement the planning and do the action, while doing the action, don't keep thinking about result. While doing the action, only focus on the action. Then what will happen? If you keep diverting your mind by thinking about result while doing the action will be diluted action. And when your mind is not bothered about the result while putting the action, your action's quality will be very high, and the possibility of converting that action to desired result will be very high. I will close this talk by connecting it what I said earlier, that the scheme of thing here is inaction will guarantee failure, action will not guarantee success, but better and better quality of action actually will keep increasing the probability of your result. So what is within your control? Within your control is only to increase probability of the result. Suppose one of you in the audience is a student of graduation or post-graduation or PhD, or a student after getting degree now trying to clear any very, very demanding competitive examination. For all of them, this will be useful. And also, if you are a junior manager today or middle or senior or top manager, for them also it will be highly useful. What is being said is that non-action guarantees failure. Action does not guarantee success, but better quality of action increases the probability of success. So what is within your control? To increase the probability of your success. Now, once you have put the best action, you increase the probability to the maximum possible extent, depending on your capability. Then also the probability of failure would be there. Whatever may be your quality of action, certain probability of failure would be there. That is the scheme of thing. But another benefit would be that anyone who understands this shloka and implements in life, from his or her life, repentance will go away for let us say all time. You will not be suffering with a disease called repentance. There are many diseases with which we suffer. We may call it mental diseases. God forbid. I pray for a very good health for all of you at physical level, mental level, and spiritual level. Let good health prevail. But let me talk about some mental illness. Mental illness does not mean only that becoming eligible to be admitted to lunatic asylum. पागल खाने में भर्ती होना ही सिर्फ mental illness नहीं है. But if you have misplaced desire, if you are subjected to temperament and
quickly you are captured by anger, if you are greedy, if you have too much of attachment, if you have jealousy in your life, and if you have misplaced ego, that I have become something, these all are mental illness. These are impediments on the road of success. They create roadblock on the journey towards success or effectiveness or meaningful life. We should not always think in terms of success in life. No. And those who have not approached to, let us say, 38, 39, 40, below 40, thinking pattern is different. You think success is the most important thing in life. But then you will slowly realize, okay, success is important, but let me treat as a byproduct, not the final product I am chasing. Let success be a byproduct of my rightly chosen action. And then slowly you will find meaningfulness in life becomes more important than success, because many successful persons have found the life meaningless. And many relatively lesser successful person, they have found life to be meaningful. So dear sisters and brothers, though you might not have touched the age of 40, you should prepare in 2 different episodes right from now, that how to have a dynamic life for more and more achievement, success, workplace related skills enhancement. And these all should be achieved preferably before 40, because after 40, higher needs of life will arise. And what is the higher need? Meaningfulness is much more higher need than success. So this sutra for working women, it will help if we understand better. And I'll conclude this sutra by saying something so that I can go to some other topic. That this says that never be subjected to non-action. It will guarantee your failure. Ma to sango tu akarmani. It says that while doing action, don't hanker for result, because it will sag away your energy, dilute your action, and it will decrease the probability of success. And that's why don't think about success if you want to maximize the probability of success while doing action. So this is it. Now, if we go to the topic, spiritual empowerment for women professionals, what is meaning of being spiritual? Acha, we should also set time. Momita ji, what is the time budget for us? Sir, as suggested by the initiator, Ms. Vaishnavi Bhargava, she informed us that it can be around 1.5 hours to 2 hours, but it completely depends on the number of people present here, and we can go according to how it is moving ahead, sir. Okay, so let us say at least 1 hour 45 minutes is safe side, but we'll see the interest of the audience. If our audience wants to wind up, we'll wind up in 90 minutes, but not before 90 minutes. If interest goes further, we can go up to 1 hour 45 minutes. If interest further continues, there is no harm going up to full 2 hours. And but one change I have done already, that Sure. that last half an hour for question answer, it is not like that. Maybe last 10 minutes for exclusively question answer, because I'm asking so many questions in between, so it is intertwined. Is it okay? Fine. Yeah, sir, absolutely fine. Okay. Miss Nivedita and Miss Soyal, kindly coordinate with sir. No problem. I can ask question. I can ask clarification from Sohel ji also. So and sometime to you also, because you are captain, Momita ji. You are national chairman, no, national president of Youth and Community Empowerment. So fine. So Sohel ji, I will also keep you disturbing, and Sohel ji will also face some question, because I got a very easy prey in you, because I found that you are a student. So his students, sir. we always like a hungry person needs food, a professor needs a student. Okay. Sure, sir.
लेकिन मैं आपको खा नहीं Sir, we have a very enthusiastic person, Miss Harshita Negi as well. मैं We have Miss Harshita Negi as well, our state president for Gujarat, अच्छा and Nivedita Chauhan, our state president for Madhya Pradesh. निवेदिता चौहान जी कहाँ हैं? यहाँ तो नाम भी नहीं दिख रहा है। Hello, sir. नहीं, हर्षिता नेगी जी का तो दिखा और आपसे इंटरेक्शन भी हुआ। हर्षिता जी, यू आर फ्रॉम गुजरात। Yes, I'm from Gujarat. And okay, so I'll keep asking questions. Yes, spiritual empowerment for women professionals. Spiritual. अच्छा, I don't like a word called spiritualism. ism वाला नहीं, यहाँ spirituality है. It is spirituality. So what do you mean when we pronounce the word spiritual or spirituality? And I will make the question pinpointed. I will make it bit, let us say, conducive, easier. Suppose whenever we declare a person, he or she is a spiritual person, what does it mean to you? A person is declared as a spiritual person time and again in your society, in your locality, in your apartment, in your mohalla. अरे फला आदमी स्पिरिचुअल आदमी है. What does it mean to you? निधि मेधी जी. Hello, sir. Very good evening, I sir. would like to know which city you are sitting in now. Sir, I'm actually sitting in Himachal अरे Pradesh. बताइए शहर का नाम. Sir, Dharamshala. धर्मशाला में ठीक है. लोअर धर्मशाला या अपर धर्मशाला? Sir, Lower Dharamshala, कांगड़ा के इस पार. भैया आप तो देवी क्षेत्र में रहती हैं, तो आपसे हम लोग सीखेंगे ना स्पिरिचुअलिटी फॉर वुमेन एंड प्रोफेशनल्स. 9 देवियों का मंदिर हिमाचल प्रदेश में है, लेकिन हम लोग सबकी शुभकामनाएं. भाई वहां थोड़ी आपदा बढ़ गई है, भगवती ठीक रखें. हाँ तो बताइए, बहुत अच्छा लगा. अरे आप लोग बताइए कि हम धर्मशाला में रहते हैं, तो हम सुनते ही हम धर्मशाला पहुंच गए समझिए. ठीक है, बताइए. सर बेसिकली सर अकॉर्डिंग टू मी जब कोई बोलते हैं कि अ पर्सन इज स्पिरिचुअल, फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू सर इज दैट आई गेट टू नो दैट दैट पर्सन हैज मच मोर knowledge about the religion he or she follows. And sir, most a part of the thing is that spirituality, sir, he might have more knowledge about the Vedas, sir, the Vedas, the Rig Vedas, all the Vedas, Vedangas that we have. So he might have a proper knowledge about it, sir. चलिए, बहुत बढ़िया. तो भाई आप जब ऐसा उत्तर देंगी तो आपको हम और जरा तंग करेंगे. You use the two words Vedanta and Vedanga. What is difference between Vedanta and Vedanga? So Vedas, sir, are the oldest literatures No, please remain confined to question. What is difference between Vedanta and Vedanga? वेद क्या है उस पर मत भूलिए. आपने टर्म यूज किया ना. Yes, sir. हाँ, तो आपने कहा ना वेदांता एंड वेदांगा. So what is the difference? सर हमारे मतलब मुझे सिर्फ वेदास और वेदांगास के मतलब थोड़े डिफरेंस ही पता है सर. वेदांत का नहीं अर्थ पता है? नहीं पता सर, नहीं पता वेदांत. चलिए यही बता दीजिए कि वेदा और वेदांगा में क्या फर्क है? सर वेदा तो जैसे मतलब आई हैव सेड कि वो बहुत पुरानी जो पुस्तकें हैं जहाँ पे सब मतलब लिखा हुआ है, मैजिक के बारे में है सर. और सॉन्ग्स, देयर वर सॉन्ग्स आल्सो, स्पिरिचुअल सॉन्ग्स. एंड सर लाइक आई हैव बीन लाइक sir, I'm new to spirituality, sir. I'm really sorry if I make a mistake. आपने बहुत अच्छा प्रयास किया. चलिए मैं बता देता हूँ, लेकिन इसके पहले निधि जी मैं आपके पास फिर आऊंगा. Yes, sir. लेकिन इसके पहले अगर चलिए सोयल जी से पूछ लेते हैं, आज की सूत्रधार सोयल जी. Soil ji, a question to you is there that how many Veda is there or are there? वेद कितने हैं? I am sorry, sir, but literally I don't know. कोई बात नहीं. Let us go to गुजरात. हर्षिता जी के पास चलते हैं. हर्षिता जी,
How many जी, sir. Veda or Vedas are there? So 4 Ved होते हैं. Samved is the biggest one, I think first one. Samved, Yajurved, Atharvaved, and one more is there. I'm not able to recall. देखिए मेरे मेरे भाई का मोमिता नाम जी, है अब मोमिता जी कुछ बताएंगे? ऋग्वेद सर, ऋग्वेद मेरे ऋक मेरे भाई का नाम है, तो हमेशा याद है। अच्छा, तो ठीक है। तो मैं मोमिता जी के थ्रू से कहना चाहूंगा that basically I'm addressing to youth wing. This is youth and community empowerment, and youth is the future of the country. देखिए, मैं हूं चाहे कोई और है, please, Youth and Community Empowerment Council should also take care that basic understanding of our Shastra among youth is at least intact. There is so much of blurred understanding. These are basic things. So let me give you answer. It is interesting answer. It is interesting answer. Most accurately, if I want to say, Ved is only one. Please listen, you are going to get golden answer for lifetime clarity. In truest sense, Ved is only one. Author of Ved is not known. Only the person who compiled the Ved, his name is known, and his name is Ved Vyas. But he is not author. He has compiled it. Author unknown, because earlier days when Ved were actually documented in a script, it were written, scripted, because earlier it was not written, it was spoken. It is called Shruti, because people used to recite, memorize, and used to keep passing on to other generation, and next generation will keep passing on to other generation. But Ved Vyas documented it, and he found syllabus to be too vast, means total size of Ved became too vast, and he wanted it to pass on to other, because one day Ved Vyas will leave his body, no? So knowledge should not go away with a person. So Ved Vyas identified 4 disciples and thought that the vast syllabus of Veda should not be passed on to single person. It will be too much for any single person. So he identified 4 students and made 4 parts of Veda, and each part he gave to one respective student. One student's name was Pail, P-A-I-L, Pail. Ved Vyas gave Rig Veda to Pail. Then Ved Vyas gave Yajurveda part of Veda to Vaishampayan. Then Ved Vyas gave the Samveda part of Veda to Jaimini. And then he taught and gave as a gift the Atharveda part of the Veda to Sumantu. So 4 disciples received different parts of the Veda. But I request you one thing, in future, if you listen somebody speaking that there are 4 Vedas, don't jump on his or her neck. That in truest sense, Ved is one, only 4 parts are there. If a book has 4 chapters, we only say there is a single book. Its chapters are 4. Similarly, Ved is single. Its parts are 4. And Ved Vyas was a good teacher, so he did not overload the student, any student with all entire syllabus. So these are the 4 disciples. Their names are Pail, Vaishampayan, Jaimini, and Sumantu, who received Rig Veda, Yajurveda, Samveda, and Atharveda respectively.
And that's why answer, technically correct answer would be Ved is one which has 4 parts. Interesting or not? Harshita ji, was it interesting? But Yes, sir, absolutely. I request in future, if you listen some speaker, great speaker saying there are 4 Vedas, keep mum, don't jump on his neck. Yes, sir. क्योंकि गहरे आदमी हर जगह प्रत्युत्तर या प्रतिकार नहीं करते हैं. ठीक है भैया, बोल रहा है, बोलते रहने दो. But when you speak, you should speak like this. That Yes. Ved is one, 4 parts were met by the compiler, original author not known, 4 disciples' name are known, which disciple got which part of the Veda is known. Fine. So that was interesting. ये सब चर्चा इसलिए शुरू हो गई कि निधि जी ने वेद और वेदांग कहाँ ले गई हम लोगों को. तो चलिए वेद की थोड़ी सी आपको बात की. Quickly, that question was not related to our main topic. Difference between Vedang and Vedant. अब सुन लीजिए. वेद के बारे में थोड़ा पता चल गया, जनरल नॉलेज. ओके, नाउ कम टू वेदांग एंड वेदांत. पहले वेदांत के बारे में चलते हैं. वेद अंत. वेदांत का अर्थ वेद का अंतिम भाग नहीं होता है. The word Vedant gives a feeling that it is last part of the Veda. No, no. It is not last, but it is the supreme part of the Veda. Most highest pinnacle. Because Veda also operates, because some portion of the book becomes highest of highest order, highest quality. Suppose a rockbuster film, which is super duper hit, but every moment is not at the topmost thrilling point. Some moments of a very, very hit film, some moments are actually very, very absorbing point. So, Vedant and or Upanishad, Vedant means Upanishad. They are the most quintessential part of the Veda. They are the Jnana part of the Veda. And that's why they are called, that they are the ultimate of Veda. And that's why it is called Vedant. वेदांत किसको कहते हैं? उपनिषद को, जो वेद से ही आए और वेद की शिखर पर बैठे हुए हैं. और अलग नहीं है वेद से, या अलग से कोई आके शिखर पे बैठ गया. वो पार्ट, जैसे किसी फिल्म का कोई सीन एकदम एब्जॉर्बिंग हो जाए. पूरी फिल्म एब्जॉर्बिंग है, लेकिन उसमें भी कोई सीन ऐसा है दिल को छू लिया, नेशनल अवार्ड जिता देता है वही सीन. पूरी फिल्म जिताती है वैसे, लेकिन वो सीन माने रखता है. वेदांत इज क्लियर? निधि जी, वेदांत मीन्स उपनिषद. और आपके जनरल नॉलेज की बता दें, हमने खोजा कई सप्ताह लगा करके कि कितने उपनिषद उपलब्ध हैं. तो 194 उपनिषद आर अवेलेबल. यहां भी हम गलती कर देते हैं. पूछिए कितने उपनिषद हैं, तो लोग कहेंगे 11 उपनिषद हैं. अरे भाई, आउट ऑफ सो मेनी उपनिषद, Adi Shankaracharya interpreted 11 Upanishads. This is the correct answer. Adi Shankaracharya interpreted his chosen 11 does not mean that number of Upanishad is 11. तुम कई गलतियां कर बैठते हैं मामूली बात, मैंने साधारण क्वेश्चन पे कि वेद कितने हैं, उपनिषद कितने हैं, प्रिंसिपल उपनिषद या मुख्य उपनिषद कितने कहे गए हैं, तो उसमें वो वही 11 चुन लिए जाते हैं. शंकराचार्य को प्रणाम करते हुए चुन लिया जाता है कि जब उन्होंने 11 को चुना तो उन्हीं को हम प्रिंसिपल माने. बट इंडिविजुअली आई डू नॉट एग्री विथ दैट स्टैंड. ऑल्सो आई डू नॉट एग्री विथ कंसेप्ट ऑफ प्रिंसिपल उपनिषद, बिकॉज व्हेन आई रेड अदर उपनिषद अदर देन 11, दे वर ऑल्सो वेरी प्रोफाउंड. वो भी बड़े गहरे हैं. तो 194 उपनिषद आर अवेलेबल इन द मार्केट. चलिए, ये तो हो गया वेदांत. वेदांग क्या है? Vedang are those literature which you must study before studying the Veda. They are prerequisite reading. They are nursery reading. You need nursery class pass certificate, no? In order to go to class 1. You need matriculation certificate to go to 11th class. You need graduation certificate to go to post-graduation class. So before you start reading Vedas, please read Vedanga, because they are pre-reading for Veda. And there are 6 Vedanga. Just for example, I'm saying few. Like one is
Vedangas are like Nirukta, Chand, Shiksha, Vyakaran, Kalp, Jyotish. These six teach about basic grammar, formation of words, formation of sentence, elaboration, the meter of poetry, that is Chand, and the auspicious, the technique of knowing the auspicious time for operating on a work, that is called Jyotish. तो चलिए, ये यहाँ का सिलेबस नहीं था लेकिन मैं ले आया क्योंकि आपने शब्द बोल दिया. दैट्स वाई निधि जी, देखिए आप लोग यंग हैं, बहुत अपेक्षाएं हैं आपसे. जिस चीज को बोलिए जान के बोलिए, और किसी को आपने सुन लिया बोलते हुए तो घर में लौट के उसको खोजिए, जानिए. ये तरीका है. मैंने मुझे बहुत अच्छा लगा आपने वेदांग का शब्द का उच्चारण किया, वेदांग कहा, लेकिन क्या कह रहे हैं पता ही नहीं है. तो कम से कम आपने कहा, ये बहुत खुशी हमें दे रही है. आई एम वेरी हैप्पी विथ यू. थैंक यू सर. आप करती क्या है सर? यस सर, मास्टर्स की स्टूडेंट हूँ सर मैं. हाँ, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने कम से कम शब्द तो कहे, लेकिन थोड़ा एक स्टेप और लीजिए कि जिस शब्द को हम सुन ले कहीं से, पता नहीं तो उसको खोजेंगे. यस सर. जान के बोले. ओके सर. यस सर. चलिए, आपने स्पिरिचुअलिटी का अर्थ कहने का प्रयास किया था, बढ़िया है. मैं कह देता हूं, और इसको अंतिम वाक्य नहीं मानिएगा. I'm not in a position to define anything, but I can describe something, and description can be still better. Spiritual person कोई है. What does it mean to me? A spiritual person is one who is able to see the being part of a thing. Full stop. बात खत्म. मैं आपको बोलता हूं ऐसे, बहुत इंटरेस्टिंग है ये. चलिए, मैं फिर से, वीडियो तो काफी कम लोगों का ऑन है, तो मैं फिर प्राची जी के पास जाता हूं. प्राची जी. यस सर. I am a प्राची जी, आप क्या करती हैं? सर आई टीच, असिस्टेंट प्रोफेसर. You are a teacher like me. Okay, good. I am a teacher. ठीक है प्राची जी, ऑन रखिए ऑडियो. क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, गंभीर है, मजेदार है, क्योंकि मैं वैसे गंभीर चीज को डील ही नहीं करता जो मजेदार ना हो. आई एम हियर. Prachi ji, I give you a sentence. Suppose somebody asks you a question, what do you do in English? And in English you answer, I am a teacher. ठीक है? ये ग्रामेटिकली करेक्ट है. I am a teacher. इस I am a teacher में कोई हिस्सा ऐसा है जहां स्पिरिचुअलिटी की गंध है, सुगंध है? कहां है? बिकॉज यू आर टीचिंग. आप आ रहे हैं, पढ़ाते तभी है जब आपको के बारे में पूरा पता हो. जब आप उस चीज के बारे में जानते हैं तभी आप उस लेवल पे आते हैं कि आप किसी को कुछ सिखा सकते हैं. बहुत बढ़िया. And in my definition of spirituality, a person who knows कि उनका एक्चुअल स्पिरिट पर्पस क्या है, पर्पस ऑफ लाइफ. तो आप टीचर तभी बनते हैं जब आपको अपना पर्पस पता है, और आप अपने आप को टीचर तभी कहते हैं जब आपको उसके बारे में, उस टॉपिक के बारे में पता हो. देन ओनली यू आर अ टीचर. स्पिरिचुअलिटी इज डेफिनेटली रिलेटेड टू इट. तो मैं एक बार प्रश्न फिर से रिपीट करूंगा, क्योंकि मेरा क्वेश्चन पिन पॉइंटेड है. आपको पिन पॉइंटेड उत्तर देना पड़ेगा. I am a teacher. This is a sentence.
in which part of this sentence the spirituality, the density of spirituality is the highest? टीचर टीचर, टीचर में टीचर। अब सुनिए, मौमिता जी कुछ कहना चाह रही थी आप। सर दीक्षा जी कुछ बोलना चाहती है, शायद दीक्षा 84 जी ने कुछ मैसेज भेजा है, कुछ बोलना चाहती है इस विषय में। प्राची जी के बाद दीक्षा जी को थोड़ा मौका मिलने से बेटर था। दीक्षा जी वीडियो ऑन करिए प्लीज। अरे हम तो आपको खोज रहे हैं, लेकिन आप वीडियो ऑन करें दीक्षा जी। अच्छा, हमारी बहन तुल्य ज्योति अरोड़ा जी ज्वाइन की हैं अभी, मैं देख रहा हूं। ज्योति जी नमस्कार। ज्योति जी को हमने लिंक भेजा था, वो ज्वाइन किए, देखिए। ज्योति अरोड़ा जी रहती हैं हैदराबाद में एंड शी इज ए एजुकेशनल काउंसलर एंड ऑल्सो साइकोलॉजिस्ट। यस प्लीज। दीक्षा जी कहां चली गई? मौमिता जी दीक्षा जी को पकड़िए। चलिए कोई बात नहीं, अगला प्रश्न दीक्षा जी से पूछ लेंगे। दीक्षा सर वो कह रही है कि वो माइक नहीं ऑन कर पा रही है। नहीं तो क्वेश्चन क्या कर रही है? उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा है, उनके बिहाफ में मैं पूछ लेती हूँ सर, क्योंकि उनका कुछ इशू है माइक और वीडियो लेके, तो मैं उनकी तरफ से पूछ सकती हूँ। सुनिए, कि वो बोल रही हैं सर, ए स्पिरिचुअल पर्सन इज समवन। दीक्षा 84 जी बोल रही हैं कि सर, ए स्पिरिचुअल पर्सन इज समवन हु हैव ए डीपर कनेक्शन विद समथिंग ग्रेटर देन देमसेल्व्स। This can involve looking to questions of meaning, purpose, and the nature of reality by practices like meditation, prayer, contemplation, or mindfulness. It's a personal journey or connection that varies from individual to individual. बहुत उच्च कोटि का उत्तर है। वो बोल रही है। हाँ, दीक्षा जी लगता है दीक्षित हैं। दीक्षा शब्द जो है शिक्षा से भी ऊपर है। ये तो भाई कॉन्वोकेशन का हिंदी शिक्षांत समारोह नहीं होता है, दीक्षांत समारोह होता है। तो दीक्षा जी का जो उत्तर है उसको सुन के मन बहुत हर्षित हो रहा है मेरा। आई एम हाईली डिलाइटेड दीक्षा जी। तो बहुत बढ़िया, उसी चीज को आगे बढ़ाते हैं। एक डायलॉग चल रहा था प्राची जी के साथ, आई एम ए टीचर में उन्होंने कहा कि टीचर शब्द के आसपास स्पिरिचुअलिटी सबसे ज्यादा है। अब उत्तर पे आ जाता हूं मैं, कूद करके हनुमान जी जैसा कूद जाता हूं। चलिए उत्तर पे, क्योंकि डायलॉग में कूदना नहीं चाहिए। नाइदर प्रोफेसर शुड जंप ऑन ए कंक्लूजन नॉर द ऑडियंस, लेकिन समय कम है ना, तो जरा कूद जाते हैं। आई एम ए टीचर में सबसे स्पिरिचुअलिटी जहां घनत्व तो ज्यादा है वाक्य के किसी पोर्शन में, तो वो है एम, ए एम। आई एम ए टीचर। आपकी मुलाकात सबसे हो गई है, आई से तो होगी। रोज बोलते हैं हम सबको, डू यू नो हु एम आई, मैं कौन हूं, संभल के बात करो। ये अहंकार वाला आई से तो परिचय हमारा पूरा है। अभी एम को पोस्टपोन रखते हैं। आई एम ए मतलब एक आदमी है तो मालूम ही है कि हम भाई 5 आदमी नहीं है। एक ही सर है, एक ही मुंह है, एक ही जिगर है। तो आई और ए से हमारा परिचय है। टीचर से परिचय है क्योंकि टीचर एक डेजिग्नेशन है, एंड टीचर हैं जो भी हैं, जो डेजिग्नेशन है। एम से परिचय नहीं, कौन से बला है भाई, हूं। आई एम ए टीचर का हिंदी होगा मैं एक शिक्षिका हूं। ये हूं जो होना है एम, इसको मैं कहता हूं ए एम डैश एन ई डबल एस, एमनेस। गलत मत सोचिएगा, वो ए आई एम एम नहीं है। आई एम ए टीचर में जो एम है ए एम, तो आप लिखिए ए एम डैश एन ई डबल एस, तो होगा एमनेस। ये हूं होना, ये हूं का जो होना है, यही स्पिरिचुअलिटी यहां पर सबसे ज्यादा है वाक्य में। प्राची जी, आप मुझसे अगर अलग या गलत मानती हैं तो आप कहिए, या आपको अच्छा लगा तो ही कहिए। चलिए ऑडियो ऑन करिए। Of course, sir, it's learning. That's why it's good.
तो डेजिग्नेशन में कौन सी स्पिरिचुअलिटी है, और आई में तो कोई स्पिरिचुअलिटी है नहीं, तो स्पिरिचुअलिटी का एंटीथेसिस है। आपका आई तो स्पिरिचुअलिटी से दूर रखे हुए आपको, तो ना आई स्पिरिचुअलिटी का बहुत हाई कंडेंस्ड पॉइंट है, नाइदर टीचर नॉर ए इट इज एम होना। ये पहली बात। देखिए टॉपिक को अब हम समेट रहे हैं और उसके डीप में जा रहे हैं। स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट फॉर वीमेन प्रोफेशनल्स। सबसे पहले हम स्पिरिचुअल को पे चर्चा करेंगे और इसमें गिविंग मिसगिविंग को टेकअप करेंगे, एम्पावरमेंट को समझेंगे और वीमेन को समझेंगे और प्रोफेशनल्स को समझेंगे। और आप कहेंगे आप कौन होते हैं, वीमेन हम हैं और आप वीमेन को समझाएंगे। हमने क्या कोशिश करेंगे भाई, ठीक है। तो चलिए, स्पिरिचुअल का पहला डिस्क्रिप्शन ये है, इट इज स्टेट ऑफ बीइंग एंड सेंट्रल स्टेट ऑफ बीइंग। सबसे पहले जो हमने डिस्क्रिप्शन देने की कोशिश की, स्पिरिचुअलिटी इज द क्विंटेसेंशियल एसेंस ऑफ बीइंग ऑफ ए थिंग। अब मेरा नाम पवन कुमार सिंह है, हमको भी एक थिंग मान लीजिए, एक पदार्थ मान लीजिए। आई एम ए थिंग, THING। What is my most essential being? That is spirituality. Now my designation, I'm sorry, I don't have any visiting card here. I could have shown you. लीजिए कुछ भी, जैसे ये बॉक्स कोई मेरा विजिटिंग कार्ड मान लीजिए, ठीक है ना। अब विजिटिंग कार्ड इतना ही छोटा होता है ना, कितना होता है, 1.25 इंच ऊंचा होता है, थोड़ा सा लंबा चौड़ा होता है। उस पर लिखा होता है डॉक्टर पवन कुमार सिंह मेरा नाम, डायरेक्टर IIM तिरुचिरापल्ली, हो गया। मेरा प्रश्न यह है कि क्या मेरी ऊंचाई ये विजिटिंग कार्ड के 1.25 इंच की ऊंचाई के बराबर ही है कि मैं जरा उससे ज्यादा ऊंचा हूं? मेरा तो फिजिक ही 6 फीट का है, मैं थोड़ा लंबा आदमी हूं। मेरी विजिटिंग कार्ड 1.25 इंच ऊंची है और मैं उसके पीछे छुप के बैठ गया हूं। कोई पूछता है टेल अबाउट योरसेल्फ, आई एम डायरेक्टर। टेल अबाउट योरसेल्फ, आई एम डायरेक्टर। ठीक है, जहां जरूरत पड़े वहां बताइए, जहां प्रोटोकॉल की बात है वहां बताइए। लेकिन क्या मेरा डायरेक्टर होना ही जो है वो 100% होना है? टीचर होना, मैं भी बेसिकली टीचर हूं। तो your aimness, AMNNS, is your spirituality. दूसरी बात, a very interesting characteristics of a spiritual person is like this. ज्योति जी फिर ज्वाइन करेंगी लगता है। अच्छा लगा, थोड़ी देर के लिए आई थी लेकिन फिर आ जाएंगी शायद। अरे आप तो हैं जी, लेकिन बहुत देर से मैं आंखें पसारे हूं। प्रेक्षा सेठिया जी, जागृति दोषी जी, यश कालरा जी, वेदिका जी का वीडियो ऑन नहीं देखा। तो कोई बात नहीं, जब वो इच्छा ऑन करिएगा। तो पहली चीज हमने डिस्क्राइब कर दी कि स्पिरिचुअल पर्सन का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। ही keeps inquiring about, or she keeps inquiring about the essential core of a being of a thing. सर मुझे एक चीज कहनी है स्पिरिचुअलिटी के बारे में। मेरे माइक ऑन नहीं था और मैं बोले जा रही हूँ और सोच रही हूँ कि पहुंच क्यों नहीं रहा है मेरी बात सर तक। शायद स्पिरिचुअलिटी यही मिसिंग है, कनेक्ट नहीं कर पाते जो। मुझे लगता है स्पिरिचुअलिटी का एक छोटा सा मीनिंग है, जब हम अपनी एग्जिस्टेंस में गॉड की एग्जिस्टेंस को देखें और अपना हर कर्म उसको समर्पित कर पाते हो, चाहे हमें किसी वेद का ज्ञान हो या ना हो। तो अपनी एग्जिस्टेंस में गॉड की एग्जिस्टेंस को ही महसूस करना शायद स्पिरिचुअलिटी का हिस्सा है। चलिए, बहुत बढ़िया जवाब है। तो इसको हम दूसरे पॉइंट पर गिन लेते हैं, और जो मैं दूसरे पर गिन रहा था उसको मैं तीसरे पर ले जाऊंगा। ज्योति जी ने जो कहा बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जो हमारा बीइंग है, माय बीइंग, क्योंकि बीइंग पर तो हम पहला पॉइंट बताए थे,
there is something beyond that. There is some vast energy sources which are regulating the things. There is something which is actually, I will not say that it is controlling, but I'll say regulating, and जिसको विराट का एक अस्तित्व का एक जो है हम उसकी परिकल्पना करते हैं. So spiritual person is not confined to his or her own being only, but knows something bigger exists. समझ गए? जैसे चलिए यहाँ पर मैं बैठा हुआ हूं और ये यहाँ एक स्विच आपको दिख रहा है? कुछ स्विच नहीं दिख रहा है. अच्छा, बहुत दूर चला गया होगा इसलिए, तो कोई बात नहीं. ये बिजली का एक स्विच है और एक रेगुलेटर है पंखे का. तो क्या है कि हम और आप बिजली के स्विच हैं, और बिजली के स्विच को किसी ने पूछा कि तू पंखा ऑन करता है, ऑफ करता है? उसने कहा हाँ, मैं जब 0 पे रहता हूं पंखा ऑफ, मैं जब 1 पे रहता हूं पंखा स्लो, जब 4 पे चला जाता हूं पंखा फास्ट, सीलिंग फैन. तो लोगों ने पूछा क्या तू ही पंखे को चलाता है? बोला हाँ मैं ही चलाता हूं. नहीं, और कोई नहीं चलाता? बोला और कौन चलाएगा? मैं चलाता हूं. हमारी आपकी हालत उसी स्विच के जैसी हो गई है. उस बिजली के स्विच के पीछे, बिहाइंड दैट इलेक्ट्रिसिटी स्विच, electrical switch, there is a vast mechanism of producing electricity. Here electricity is coming from some vast sources. It may be a thermal plant, it may be a hydro plant, it may be a nuclear plant, it may be gas based plant, it may be non-conventional energy source. So if switch thinks that I am doing, is the switch wise? Yes or no? हर्षिता जी. नो सर, क्योंकि उसमें बहुत लोगों का इन्वॉल्वमेंट है. नहीं, लोगों का नहीं, स्विच के बारे में पूछ रहा हूं. हाँ, मतलब सर जैसे आई एम, व्हाट आई फेल्ट इज व्हेन आई से आई एम अ टीचर, तो सर वो आई एम ईगो नहीं हो जाएगा? क्योंकि नहीं, आई एम स्पिरिचुअल पूरा ईगो नहीं होगा. आई ईगो को लीड कर सकता है. आई इज नॉट ए बैड वर्ड. आपको बोलना पड़ता है ना कि माई नेम इज हर्षिता, तो मैं आपके ऊपर जंप करूंगा और बोलूंगा अरे माई नेम इज हर्षिता. आप माई यूज करती हैं, आप तो बहुत अहंकारी हैं. अरे काम चलाओ शब्द तो बोलने पड़ेंगे. माई आधार कार्ड नंबर इज दिस, माई हाउस नंबर इज दिस, माई कार इज दिस, माई पेन इज दिस. तो माई और आई का काम चलाओ इस्तेमाल करिए. But the moment you become attached to it, that becomes roadblock for your self-efficacy. that becomes ego. That becomes ego. इसलिए I और my खराब शब्द नहीं है. But some persons only live around 4 words: I, my, me, mine. इन चारों से बाहर उनकी दुनिया ही नहीं है. उनकी दुनिया बड़ी संकुचित हो जाती है. फिर इस दुनिया में वो जो छोटी सी संकुचित दुनिया बनाए, उसमें सुगंध नहीं रहती है. इसीलिए जो ज्योति जी ने पॉइंट उठाया उसको मैं कॉन्क्रेटाइज कर देता हूं. पहला पॉइंट क्या था कि एसेंशियल कोर ऑफ द बीइंग ऑफ एनीथिंग इज स्पिरिचुअलिटी, एंड सेकेंडली I know that I'm connected to the vast source. Whatever may be form or formless is indication of a spiritual person. And third point I will add here, one who looks at others as extension of self and who looks at the self as extension of others is a spiritual person. अब जैसे हम लोग जो भी 20 लोग यहां बैठ के बातचीत कर रहे हैं, हम लोगों का जन्मदिन अलग है, ठीक है? सोहेल जी. Yes, sir. सोहेल जी, we are persons of different age. Fine, yes or no?
Yes, sir. ऑडियो ऑन रखिएगा. Our date of births are different. Yes, sir. Some are sister folks, some are brother folks. Gender is different. Yes, sir. Skin color is different. Height is different. Body weight is different. Parents are different. Native Yes, place sir. is different. Names are different. Subjects you studied are different. अगर हम आपस में भेद खोजने जाए ना, तो हम लोग सब एक दूसरे को मरे मारेंगे कि मेरे साथ तू है ही नहीं, डिफरेंट है, खाली डिफरेंस देख रहे हैं. स्पिरिचुअल पर्सन इसमें एक चीज देख लेता है. जहां बुद्धिहीन भेद बुद्धि से देखते हैं, वहां स्पिरिचुअल पर्सन जो बुद्धिमान है, स्पिरिचुअल होना ही बुद्धिमान होना है, कोई अलग से नहीं उसको बुद्धिमान होना है. स्पिरिचुअल पर्सन विभेद में, स्पिरिचुअल पर्सन भेद में एकता देख लेता है, भेद में एक देख लेता है, और नॉन स्पिरिचुअल पर्सन एक में भेद देख लेता है. तू अलग, मैं अलग, मेरा हिसाब किताब अलग कर. समझ गए? Yes, sir. अब कहना क्या चाह रहे हैं? Actually, we all 20%, or just 20%, I'm taking example because we are together. We are all one only. We are only one. It is just like we are 20 different balloons, but only from one source the air has been pumped into us, and this balloon is born on a day. It has its own life. We are different balloons, but inside balloons air is same. Our physical body is different, but our chetana is same, our consciousness is same, our spirit is same, the God dwelling inside is same. जब ऐसा आपको दिखाई देगा तो आप नफरत कर पाएंगे किसी से? अरे दूसरे से नफरत करना स्वयं से नफरत करने जैसा आपको लगने लगेगा. जो सब में एक को देखता है और एक ही को सब में देखता है, वही वास्तव में देखता है. ऐसा गीता में कहा गया. आई एम नॉट कोटिंग द संस्कृत, जो संस्कृत बोले फिर ट्रांसलेट करें, लंबा टाइम लगेगा. तीसरा क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जीवन में अगर एक चीज उतर गई ना, करामात हो जाएगा. फिर मैं भी कोशिश करता रहता हूं उतारने की, लेकिन फिर कभी गायब हो जाता है, फिर कभी पकड़ में आता है, फिर चला जाता है, कभी डाइल्यूटेड फॉर्म में रहता है. फिर से मैं बोल रहा हूं, one who is able to see the same in all, and one who is able to see the self in all and all in the self, कि मैं आप सबका एक्सटेंशन हूं और आप मेरे एक्सटेंशन हैं. मैं आपका विस्तार हूं, आप मेरे विस्तार हैं. ऐसा समझने के बाद आपको किसी से घृणा हो सकती है, किसी से डिसलाइकिंग हो सकती है, किसी से परायपन का बोध हो सकता है, किसी की पॉकेट मारी करने की इच्छा होगी. अरे दूसरे का पॉकेट मारा, अपना ही पॉकेट मार लिया, तो दूसरा दूसरा है ही नहीं. एक्चुअली फॉर स्पिरिचुअल पर्सन अदर डज नॉट एग्जिस्ट. अगर बहुत डीप बन जाएंगे तो अभी थोड़ा थोड़ा चलने दीजिएगा. सर जी सर, निवेदिता चौहान, हमारी स्टेट प्रेसिडेंट मध्य प्रदेश, उनका एक सवाल है आपसे कि हाउ डज मेडिटेशन हेल्प ए वुमेन प्रोफेशनल इन हर जॉब? प्रश्न बहुत अच्छा है, मैं यही उत्तर देता हूं. अब इस प्रश्न में वीमन शब्द जो है रिडंडेंट है. ये हाउ मेडिटेशन हेल्प्स वीमेन प्रोफेशनल. मेडिटेशन हेल्प्स एनी प्रोफेशनल, ठीक है ना. और वीमेन प्रोफेशनल हो चाहे मैन हो, व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ मेडिटेशन?
Nivita ji's question says that she has good understanding of spirituality, and I'm just saying my part, which she may be knowing already. Meditation's first stage is to regulate wandering mind. क्या करते हैं मेडिटेशन में? आंखें बंद और ध्यान को लगाते हैं किसी एक चीज पर, क्योंकि शून्य पर ध्यान जाएगा नहीं. हम कोई महायोगी तो है नहीं कि कुछ नहीं चिंतन करेंगे. एक ही चीज का चिंतन साध लीजिए. बी अवेयर ऑफ द साउंड अराउंड. दौड़ता हुआ मन एक सीमित चीज पर आकर केंद्रित हुआ. Then you can utilize your mind better. A wandering mind becomes your master, and a focused mind becomes your servant. And actually, mind is given to you as an instrument, and its role is the role of your servant. तो बहुत बढ़िया प्रश्न पूछ रही हैं. इनका प्रश्न था दीक्षा जी का. सुनिए, इसको मैं इंटरेस्टिंग तरीके से जवाब देता हूं. दीक्षा जी और सारे बहनों और भाइयों, हमारा और आपके साथ एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य हो गया है. हम लोग दुर्भाग्यशाली प्राणी हो गए. क्या दुर्भाग्य हो गया? जिसको मालिक होना था वो नौकर बन गया, और जो नौकर होना था वो मालिक बन गया. Malik, who was the owner? Owner was the self, the consciousness, the Chetana. And who was the servant? Servant was the mind, Man. And purpose of Man is to relate. That's why if it is faster, it is better. If something has to relate, the instrument's nature is faster. It is good. But then that came to your disadvantage. बुद्धिमान पुरुष कठिन समय को भी अपना फेवरेबल बना लेता है, और हमारे जैसा मूढ़ आदमी फेवरेबल चीज को अनफेवरेबल बना लेता है. तो आप कहेंगे कि अरे मन तू दौड़ता क्यों है? अरे दौड़ता क्यों है? मन का काम तो पूछिए, तुम्हारा काम क्या था? मन का काम रिलेट करना है. रिलेट करने वाली चीज जितना फास्ट हो उतना अच्छा है. That's why never abuse the nature of mind, because mind's nature is perfectly apt as per the role given to it. लेकिन सवाल अब है, you were the master and at your order mind should have done its activities. But what has happened? Your bad luck and my bad luck. The mind, the true servant, actually has taken up the position of the master, and you, the consciousness, the Chetana, the master, for long time, for long years, for long decades and centuries, and maybe in many births, we have taken the role, the Chetana has taken the role of servant. This topsy-turvy relation between master and servant is one of the greatest bad luck human being is suffering with. Now, meditation reverses the process. Meditation reverses the reverse process. समझे ना? जैसे मान लीजिए ये एक पैड हमको दिया गया था, जो भी इसमें लिखा हुआ है, पढ़ना जरूरी नहीं है, लेकिन लिखा हुआ सीधा दिख रहा है ना? हाँ कि ना? कोई पता है? सीधा दिख रहा है. अब इसको हमने उलट दिया, अब हम इस तरह से रहने लग गए. मास्टर सर्वेंट बन गया, सर्वेंट मास्टर बन गया. मेडिटेशन क्या करता है? उल्टा हुआ चीज को फिर से उलट देता है, फिर सीधा हो गया. उस पर क्या लिखा है जरूरी नहीं है, तो ऐसे कुछ लिखा है. हम उल्टे हो गए, मालिक को नौकर, नौकर को मालिक बना दिया. नाउ मेडिटेशन regulates the mind and reminds the mind, hey mind, we respect you, you are a wonderful instrument, you have greater skill, you can run faster, you can relate, but you will have to do your work as per my order, not that I'll keep dancing at your call. In this way, meditation helps. I'll say every day at least 15 minutes meditation is
your right and duty both. So here I end my answer of this question. So स्पिरिचुअल पर्सन के और कई डिस्क्रिप्शंस हो सकते हैं. मैं कोशिश कर रहा हूं 108 डिस्क्रिप्शन निकालने का. 71-72 निकाल चुका हूं, आगे भी और काम चल रहा है. उसमें से 3 हमने आपको बताया कि हु इज ए स्पिरिचुअल पर्सन. अब आइए एम्पावरमेंट पर, यानी स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट. एम्पावरमेंट बेसिकली मीन्स टू कैपेसिटेट ए पर्सन. तो टॉपिक देख के लग रहा है कि वुमेन हैज टू बी स्पिरिचुअली एम्पावर्ड, इजंट इट? वुमेन, प्रोफेशनल वुमेन, यही लग रहा है. इनसे बात करें क्योंकि वही 2-3 चेहरे सामने हैं, अर्शिता जी, मोमिता जी और स्वेल जी. बाकी लोग खाली ऑन करके बैठ गए या कहीं चले गए हैं. वेदिका जी तो कहीं है ही नहीं मैदान में. निवेदिता जी एक और आई हैं. आप पहले भी थी ना? हाँ, आपसे चर्चा करते हैं. निवेदिता जी ऑडियो ऑन करिए. नो प्लीज, ऑडियो ऑन, बोलिए. और कौन है? काजल हरिन सर वेदिका जी. है? वेदिका जी है. वेदिका जी प्रेक्षा है. नहीं, जिनका वीडियो ऑन है, जिनका वीडियो तो ऑन करें सब कोई. वेदिका जी कहाँ है? वीडियो ऑन करिए. मैं तो नाम इसलिए ले रहा हूं कि ऑडियो ऑन करिए, लेकिन उससे पहले वीडियो तो खुद ऑन करिए. हाँ, वेदिका जी आ गई हैं. और वेदिका जी के बाद मैं आपके पास आऊंगा. फिर निवेदिता जी आप दूसरे मोबाइल से आई हैं. वेदिका जी, ये विमेन को स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट करने की बात चल रही है इस टॉपिक में, स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट फॉर वीमेन प्रोफेशनल्स. अब स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट फॉर वीमेन और स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट फॉर मेन में कोई भेद है नहीं. हाँ, भेद यह है कि थोड़ा परिवेश स्त्रियों का, महिलाओं का कुछ अलग हो सकता है. डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी की हम बात करते हैं एट वर्क प्लेस एज वेल एज इन होम. पुरुष वर्ग थोड़ा होम में अपना हाथ पैर झाड़ के शायद बैठ जाता होगा कि हम तो भाई नौकरी करके आ गए, और बेचारी स्त्री भी नौकरी करके आ गई, लेकिन भाई घर का काम में बेसिकली वही काम करें. ये थोड़े मोड़े फर्क हैं, कोई खास नहीं. आप तो सिर्फ ये बात करिए कि ह्यूमन बीइंग के लिए, फॉर टाइम बीइंग फॉरगेट अबाउट मेन एंड वीमेन, ह्यूमन बीइंग के लिए स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट के लिए क्या होना चाहिए. मैं आपसे पहले पूछता हूं वेदिका जी, ऑडियो ऑन. कैसे करें स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट ह्यूमन बीइंग का? चाहे आप हो, हम हो, कोई स्त्री हो, कोई पुरुष हो, कोई फर्क क्या पड़ना है. कैसे करें स्पिरिचुअली एम्पावर्ड? सर मुझे ज्यादा कुछ पता नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से हम योग कर सकते हैं स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए. हाँ, तो क्या कर सकते हैं? कोई एक स्टेप? मेडिटेशन. हाँ, मेडिटेट कर सकते हैं. ठीक है, सही कहा आपने. मेडिटेट करने से क्या होगा? आपकी दौड़ती हुई जो चिंतना है वो एक जगह खड़ी हो जाएगी और आपकी बात मानेगी. मन दौड़ता हुआ आपकी बात नहीं मान रहा था, खड़ा हुआ मन आपकी बात मानेगा. बहुत बड़ी बात हो जाएगी, बहुत बड़ी घटना हो जाएगी जीवन में. तो पहला तो हमको मेडिटेट करना चाहिए. दूसरा ये है, ठीक है वेदिका जी, ओके. दूसरा और इस मामले में अंतिम पॉइंट कि स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट के लिए क्या करना, चाहे मेन हो चाहे वुमेन हो. पहला बुक्स रीड कर सकते हैं सर. हाँ, स्पिरिचुअल बुक्स रीड कर सकते हैं. हाँ, रीड कर सकते हैं. लेकिन क्या है कि स्पिरिचुअल बुक में एक लिमिटेशन ये होता है कि यू विल अंडरस्टैंड द स्पिरिचुअल बुक एज पर योर परसेप्शन. What the book wants to say, you will not understand. What you want to understand, you will understand. That's why whenever you take the reading as methodology,
you should go to a person who has already read it or who has already practiced it. Otherwise, only reading will not misguide you, but it will keep giving only diluted version of its meaning, because you get the meaning from the book as per your own understanding. Or you may impose your perception on the meaning of the book, and the book will not be able to reveal its truth or even fact. Forget about, let us say, the ultimate meaning of it. लेकिन बहुत अच्छा कहा आपने, बुक भी पढ़ सकते हैं और बुक पढ़ने के साथ साथ बुक को जानने वाले के पास भी जाना पड़ेगा, यानी सत्संग भी करना पड़ेगा. यस, आप कुछ कह रही थी. यस प्लीज निवेदिता जी. यस, नाउ यू कम. सर, आई वांट टू ऐड वन थिंग. ऑफ कोर्स ये ईयर्स से है, ये मेरा खुद का ओपिनियन नहीं है, पर आप ये कह सकते हैं कि मैंने रियलाइज किया है. एक इंसान की स्पिरिचुअलिटी तब ही बढ़ती है जब वो गुड डीड्स में, ह्यूमन सर्विस में अपने आप को इन्वॉल्व करता है, सोशल सर्विस में अपने आप को इन्वॉल्व करता है, अपने कर्म अच्छा रखता है. तो वैसे भी दिस इज अनदर वे टू इंक्रीज स्पिरिचुअलिटी, टू बी अ गुड ह्यूमन एंड टू डू गुड डीड्स बिसाइड्स मेडिटेशन और जो और भी आध्यात्मिक तरीके हैं. तो इफ आई एम राइट सर, निवेदिता जी क्या कहें, मैं उम्र में बड़ा हूं इसलिए ऐसा कह सकता हूं. आपने खुश कर दिया, आनंद आ गया उत्तर सुन करके. देखिए, वेदिका जी का उत्तर, निवेदिता जी का उत्तर, और जो शुरू में हमने एक बॉल को रोलिंग किया था, ये बिल्कुल सही जा रहे हैं कि इन ऑर्डर टू मेक माई सेल्फ स्पिरिचुअली एम्पावर्ड, बीइंग इन द रोल ऑफ ए वुमन, meditate. Second one is that read the scriptures, and third one is that, which Nivedita ji said, get involved in auspicious deeds. Your action, your doing, the doing which is in welfare for all. अब आप कहेंगे मैं नौकरी इसलिए कर रही हूं कि हमको पैसा मिल जाए, बड़ा कार, बड़ा गाड़ी, अच्छा भोजन, 5 स्टार होटल में रोज जाएं. बिल्कुल जाइए, बड़ी कार खरीदिए. आप लोग, आज भी होगा कुछ लोगों के पास, नहीं है तो खरीदने की क्षमता प्राप्त हो और आप लें. अगर आपको लगता है बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है तो ले लें, कोई दिक्कत नहीं है. बड़ा घर आपको लगता है बहुत इंपॉर्टेंट तो ले लें. लेकिन मेरा ये कहना होगा कि अगर छोटा घर जिसमें आप रह रही हैं, अगर काम नहीं चल पा रहा है, इसके लिए बड़ा घर लेना है तो बड़ा घर लीजिए. लेकिन आपका घर आज का बहुत बढ़िया है, सब चीज सुविधाएं हैं, लेकिन चूंकि हमारे पड़ोसी ने और बड़ा ले लिया और हमारे चचेरे भाई ने, बहन ने और बड़ा ले लिया, अब उसको दिखाएंगे उससे एक बेडरूम मेरा ज्यादा रहेगा, वो सब घन चक्कर में पड़िएगा तो स्पिरिचुअलिटी और डाउन हो जाएंगे. आप जानिए आपको क्या नीड है. इफ यू हैव नीड and you build the capability to purchase it, but you should be sure it is need, it is not greed. Then if you have wealth to purchase it, please purchase, nothing wrong. कहीं पर भी स्पिरिचुअल बुक धनी होने से मना नहीं करता है और संसार के भोगों को भोगने से मना नहीं करता है. मैंने कहा ना 194 उपनिषद उपलब्ध हैं. द फर्स्ट उपनिषद इन द लिस्ट इज ईशावास्योपनिषद. And first Upanishad's first shloka says that you must enjoy the things in the world. Tena tyaktena bhunjitha. Bhunjitha means you should enjoy everything, but with a rider. Tyakten, with detached involvement. Suppose you need a big car, have a big car. But only I should have big car so that it should be the best car in my locality. लोग मेरी कार को देख करके आहें भरें. Then you are in a wrong path. If you need a big car, have the big car. If you have capability of purchasing big car, nothing wrong in bhoga, but bhoga with detachment. Ten tyaktena bhunjitha. तो वेदिका जी की मदद से और निवेदिता जी की मदद से हम 3 पॉइंट पर पहुंचे. In order to become spiritually empowered as a woman, we should meditate. We should read scriptures combined with, we should keep also sometime meeting person who knows scriptures. And thirdly,
our action should be exalted action, auspicious action, action for larger purpose. तभी तो प्रार्थना हम करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। करते हैं कि नहीं करते हैं कि सभी सुखी रहें, सभी निरोग रहें, किसी को कोई दुख ना हो। अपने हृदय में ऐसी प्रार्थना रखनी चाहिए कि हमारा ये काम कि साथ हम लोग 20-21 लोग चर्चा कर रहे हैं, मैं कोई यहां पढ़ा नहीं रहा हूं, हम सबसे सीख भी रहे हैं। हम तो एक सूत्रधार जैसा है, जो काम स्वयं नहीं कर रही वही हम भी कर रहे हैं, बस मैं टॉपिक के आधार पे कर रहा हूं, उन्होंने मुझे यहां बैठने का इंतजाम करवा दिया, यही फर्क है। बाकी हम लोग सब सूत्रधार हैं, सीख रहे हैं एक दूसरे से। एक चीज और उसमें जोड़ देता हूं, वो है प्रेम, करुणा, भक्ति, यानी कि सरेंडर बिफोर द विल ऑफ द ऑलमाइटी। तो 4 चीज क्या हो गया? मेडिटेशन, राजयोग मार्ग उसको कहते हैं। दूसरा वेदिका जी ने बताया अध्ययन, उसको ज्ञान योग मार्ग कह सकते हैं। तीसरा निवेदिता जी ने बताया कि अच्छे कर्म करें, वो कर्मयोग का मार्ग हो जाएगा। और चौथा जो हमने जोड़ दिया, हृदय को शुद्ध करें, चित्त को शुद्ध करें, चैंटिंग करें, भजन करें, ईश्वर का नाम लें, ईश्वर को प्रेम करने वालों को प्रेम करें। और आप कहते हैं कि मैं ईश्वर को नहीं मानती, कोई बात नहीं है, नहीं मानते हैं तो भी वो एक रास्ता है। आप ईश्वर के बंदे इंसानों से प्रेम करें। वो भक्ति मार्ग हो जाएगी। ये 4 रास्तों से स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट फॉर वुमेन हो सकता है। तो चलिए, कंक्लूजन से पहले मैं आपको कुछ और चीजों को दर्शन कराता हूं। बस 2-3 मिनट बोलूंगा, फिर कुछ क्वेश्चन आंसर होगा, फिर बंद भी करेंगे। दैट women professionals slowly they are gaining momentum in the whole world including India. And since you are born woman, most of you, all of you almost, you have been born at a right time in India. The scope is open, space is open. आपको कहीं भी मन में कोई शंका रख करके डरने की, संकोच करने की बात ही नहीं है। You have to only keep building your capability and marching. And the whole system is looking forward to support your cause, to support the cause of women. In USA, it was done in early 1990s, and it was found that there was certain kind of partiality towards women managers. But when the same survey was repeated in around 2005, it was found that in all 3 countries, the partiality practiced towards women in all 3 countries had decreased. आपको जान के हैरानी होगी कि को आर्थिक दंड लगा दिया गया। Am I audible? Yes, sir. Am I audible? Yes, sir. 2-3 मिनट में खत्म करूंगा। Yes, sir, yes. फिर क्वेश्चन आंसर टाइम होगा तो करेंगे, नहीं तो समाप्त करेंगे। देखिए, आपको ये जान के खुशी ही होगी कि पेरिस में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर को आर्थिक दंड लगा दिया गया, क्योंकि नियम ये था कि कोई भी एक जेंडर का एम्प्लॉय 2/3 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, चाहे मेल 2/3 हो जाए मैक्सिमम या फीमेल हो जाए। अब उसने क्या किया कि 3/4 एम्प्लॉय फीमेल को भर दिया, विमेन को, नियम तोड़ दी उसने, दंड लग गया। उसे पूछा गया, भाई जब आपको मालूम था तो आप क्यों किया ऐसा? तो उन्होंने कहा कि भाई हम योग्य एम्प्लॉय खोज रहे थे, उतनी संख्या में मेल से हमको मिला ही नहीं, हमको फीमेल से मिला। हमको काम भी चलाना था, एम्प्लॉयमेंट भी देनी थी और ठीक से
डिप्लॉयमेंट भी करनी थी। तो खुशी की बात है कि जहां आप मेल को खोज रहे हैं वहां फीमेल अपना दम दिखा करके अपने जगह को बना रही है। ये अच्छी न्यूज ही, खराब लगी आपको न्यूज? इसको उल्टा एंगल से मत देखिएगा कि चूंकि विमेन एम्प्लॉय को बहाल कर दिया इसलिए दंड लग गया, ऐसा नहीं। लेकिन जेंडर बैलेंस होना चाहिए। कहीं आप सिर्फ मेल को भर लीजिएगा, कहीं सिर्फ फीमेल को भर लीजिएगा, तो अच्छी बात नहीं है ना। दोनों को मौका मिलना चाहिए। तो नियम यही था कि वन जेंडर शुड नॉट हैव मोर देन 2/3, आइदर मेल और फीमेल। But male capable employees were not available, so female were filled, but rule was broken, so financial punishment was imposed. दूसरा, अभी कुछ साल पहले नॉर्थ कैरोलिना यूनिवर्सिटी यूएस में जेंडर डाइवर्सिटी के लिए मेल को प्रेफरेंस दिया जाने लगा एडमिशन लेने के लिए, क्योंकि फीमेल स्टूडेंट्स की संख्या 85% पार कर रही थी। तो भाई पूरी दुनिया में बहनें अपना दम दिखाना शुरू कर दी हैं। उनके दम के सामने सभी नतमस्तक हो रहे हैं। अब हमारी फाइटर प्लेन जो है इंडियन एयरफोर्स की, हमारी बहनें चला रही हैं। वैज्ञानिक कितने इसरो की बहनें जो है, जो भी चंद्रयान गया उसमें कितनी बहनें हैं। आप साइंस में ले लीजिए, इंजीनियरिंग में लीजिए, मेडिसिन में तो पहले से भी थे, अब तो और ज्यादा हो रहे हैं। जहां जहां नहीं थे वहां भी अब बहुतायत में दिख रहे हैं। हमारे आईआईएम में अब हर साल तो एक ही परसेंटेज नहीं रहता मेल फीमेल रेशियो का, लेकिन 40 to 55% के बीच में फीमेल का रेशियो झूलता रहता है। किसी किसी बैच में तो लड़कों से ज्यादा लड़कियां एमबीए में आ जाती हैं आईआईएम में। तो कहीं अब आपको कुछ भी संकोच करने की जरूरत नहीं है। और अगर आपके कोई छोटे हैं जो अभी नहीं सुन रहे हैं, तो उनको भी कहिए कि सिर्फ लड़की होने के नाते जन्म लिया तो कोई बाधा बन जाएगी। अब वो जमाना खत्म हो गया। और रिसर्च के आधार पर हमने आपको बताई कि इवन जर्मनी, इंग्लैंड और अमेरिका में ऐसे परसेप्शन थे जो कि स्पेशली 20 सालों में, और खास करके 1985 के बीच से लेकर के 2005 के बीच में बहुत झंझट था कि नहीं कितना बहाल करेंगे, फीमेल को नहीं लेंगे, कम लेंगे, उनके साथ कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। अब वो सब खत्म। यू हैव टू एक्सेप्ट ऑल ऑन इक्वल फूटिंग। और अपनी कैपेबिलिटी से जो है वो महिलाएं अब पुरुषों को पीछे छोड़ रही हैं। तो मैं आपको दो बात कह के कंक्लूड करूंगा। एक तो ये कि प्रेमचंद ने कहा था, हिंदी के राइटर, कि जैविक विकास के मार्ग पर, जो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन है चार्ल्स डार्विन का, जैविक विकास के मार्ग पर स्त्रियों ने पुरुषों को काफी पीछे छोड़ दिया है। इसका मतलब कि अगर मेल भी ह्यूमन बीइंग है, फीमेल भी ह्यूमन बीइंग है, वो फीमेल कहीं अलग से पैदा थोड़ी होती हैं, मेल से ही पैदा होती हैं। मेल कहीं अलग से दुनिया में थोड़े आ जाता है, फीमेल से ही पैदा होते हैं। सब एक ही हैं, हम लोग थैली के चट्टे पट्टे। थोड़ा अंतर इसलिए ईश्वर ने बना दिया कि थोड़े थोड़े रोल माता पिता होने के अलग अलग हैं, बाकी और क्या रोल है भाई अलग होने का, हम लोग सब एक हैं। तो प्रेमचंद का एक कथन देखिए, आज नहीं 50 साल पहले उन्होंने लिखा कि जैविक विकास के मार्ग पर स्त्रियों ने पुरुष को पीछे छोड़ दिया है। जब मैं इसको पढ़ा तो मैं बहुत खुश हुआ कि कम से कम मैं उस मां से पैदा हुआ हूं जो स्त्री है, उस वर्ग से है जिसने पुरुषों को विकास के मार्ग पर पीछे छोड़ दिया। यानी कि बेटर ह्यूमन, बेटर क्रिएचर है फीमेल मेल से, ऐसा प्रेमचंद का कहना था इस वाक्य के आधार पर। और दूसरी बात मैं आपको कहूं कि अपना विकास जरूर करिए, रास्ते में कोई बाधा नहीं है, सपोर्ट लीजिए जहां जरूरत हो, थोड़ा कॉशियस जरूर रहिए। मैं बहनों से आग्रह करूंगा, नकल मत करिए। मैं ये भी नहीं कहूंगा साड़ी ही पहनिए, ये सब मत पहनिए, वो सब नहीं, लेकिन अपनी अस्मिता की, अपनी सुरक्षा की के लिए अलर्ट थोड़ा जरूर रहिए। क्योंकि भाई रात के अंधेरे में अकेले जाना है तो वहां थोड़ा पुरुष और स्त्री में भेद हो जाता है। मत जाइए अकेले, किसी को साथ लेके जाइए, या अपना रूटीन ऐसा मत करिए। लड़कों की नकल ना करिए, नहीं तो आप कार्बन कॉपी हो जाएंगे लड़कों की।
एक स्त्री पूर्ण स्त्री के रूप में खिल जाए और एक पुरुष पूर्ण पुरुष के रूप में खिल जाए, तो दोनों की मर्यादा है, ओरिजिनल रही है। स्त्री होने में गरिमा है, उसको जानिए और अपने मार्ग को प्रशस्त करते हुए पुरुष वर्ग को भी पूरा सपोर्ट दीजिए। आप दे ही रहे हैं, अरे पिता तो पुरुष ही हैं, भाई पुरुष है, पति पुरुष होता है, सब अच्छे लोग ही हैं ना, कोई खराब लोग थोड़ी पुरुष होते हैं। गौतम बुद्ध जंगल में ध्यान कर रहे थे और अब ध्यान से निकलने ही वाले थे, आंखें खोलने ही वाले थे कि 4-5 लोग दौड़ते हुए उनके पास आए जंगल में और पूछे कि अभी कुछ सेकंड पहले आपने एक स्त्री को यहां से जाते भागते हुए देखा है? तो गौतम बुद्ध ने कहा कि मैं आंखें खोलने ही वाला था कि कोई जाता हो तो हमने देखा, लेकिन अब मैंने देखना बंद कर दिया है कि वो स्त्री था कि पुरुष था। वो स्त्री थी कि पुरुष थी, ये अब मेरी आंखें नहीं देखती हैं। स्त्री पुरुष से ऊपर हो गया। इसलिए आपको भी स्त्री पुरुष का बंधन शरीर का बंधन है, मन भी स्त्री पुरुष का एक ही होता है, लेकिन ब्रेन थोड़ा अलग अलग होता है। न्यूरोसाइंटिस्ट ने कहा कि स्त्रियों में इमोशन का और कम्युनिकेशन का जो 2 पॉइंट्स हैं वो पुरुषों के 2 पॉइंट से मुकाबले थोड़ा ज्यादा नजदीक होते हैं। इसलिए स्त्रियां जब बोलती हैं तो अपने इमोशन को प्रकट कर देती हैं। पुरुष जो है वो थोड़ा छुपाने में महारत हासिल है उसको, और ऐसा जरूरी भी है। इसलिए आप देखेंगे कि माताएं तुरंत रो देती हैं कष्ट के समय में, वो पिता जल्दी रोता नहीं है। ऐसा नहीं कि रोने की इच्छा उसको नहीं होती, या पुरुष कठोर होता है, वो खंभे के पीछे जाके रोता होगा। लेकिन ईश्वर ने ऐसा ही बनाया कि पॉइंट रेगुलेटिंग कम्युनिकेशन एंड पॉइंट रेगुलेटिंग इमोशन इन द ब्रेन इज क्लोजर इन ह्यूमन इन फीमेल्स ब्रेन कंपेयर टू मेल्स ब्रेन। इसमें थोड़ा थोड़ा फर्क है, ब्रेन का थोड़ा फर्क है, शरीर का थोड़ा फर्क है हमारे आपके बीच, स्त्री पुरुष के बीच में। बाकी मन का कोई फर्क नहीं है, हृदय का कोई फर्क नहीं है, चित्त का कोई फर्क नहीं है, और चेतना तो एक ही है। हम लोग एक ही सागर की लहरें इधर उधर कूद काद रहे हैं, समझे ना। इसीलिए पूरे इत्मीनान से अपना विकास करते हुए स्त्री पुरुष के भेद को समाप्त करने का प्रयास करिए, और उनसे कोई कंपटीशन नहीं करनी है, सब एक है, आगे बढ़िए। तो इसी शुभकामनाओं के साथ मैं अब अपनी तरफ से बातें बंद करता हूं। अगर कुछ और 1-2 क्वेश्चन 2-4 मिनट के हों तो पूछें। सोयल जी, अब आपके हाथ में सूत्रधार। जी, थैंक यू सो मच सर कि आपने हम सभी को बहुत ही सरल और साधारण तरीके से सब चीजें बताई। और शायद इस सेशन का अगर मैं कहूँ तो शायद मैंने ज्यादा चीजें सीखी होंगी, क्योंकि इस सेशन में मैं सबसे ज्यादा छोटी हूँ एज वाइज, क्योंकि मैं पीजी की स्टूडेंट हूँ। और आपने जिस तरह गीता का ज्ञान बताया और वेदास संस्कृत के श्लोक से लेके सारी चीजें, एक कहा जाए तो सार, गीता का जो आपने हमें सार दिया वो मुझे बहुत अच्छा लगा।